Yes, dear students, welcome back to classroom. Today we will try to learn important poem that relates with you and with me also. The poem is introduced by BHSS, and in the poem actual situation has been described which every student or most of the students and teachers feel when it is closing time, when it is last period. So the name of the poem has been marked as Last Lesson of the Afternoon, written by BHSS. What happens during last lesson? A total situation has been described in the poem, and it is compulsory upon the all. It is pertinent upon the all to avoid such a situation and cooperate with the teachers for your own benefit. I have told you so many times that any benefit or loss particularly belongs to you. You will leave behind. Or if progress comes, that comes to you, and you will get this benefit during your whole lifespan. So, back to the lesson. Here are some words which you may not be knowing, and these words are weariness, loss of strength. That means you don't have strength to do something. That's called weariness. Tugged, pulled. Leash, leather rope or strip, like as belt. Strand apart, made an intense effort to break away, any way to skip from the class. Horns, kind of dogs. Curry, animal or bird which is haunted. Reprehensible, deserving rebuke, deserving actually severe rebuke. Haul, pull with force, urge, push, burn, stress and strand. Dross, remains or waste. Tall, increasing bad effect of causes. Amiss, wrongly. Abyss, void, deep hole, bottomless. It is all my aunt. Here, the phrase means I don't care. Beat our head against a wall. Attempt to do something that is clearly impossible. Consume, use, endure, bear or tolerate. I will see at once. I will read the poem and you will take out books from your bags and also listen how the poem is read. Then we will go to the explanation. Some more effort. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strand apart? My pack of unruly hounds I can't start. Them again on a quarry of knowledge they hate to haunt. I can't haul them and urge them no more. No longer now can I endure the burnt of the books that lie out on the desks, a paltry score of similar work that they have offered me. I am sick and want, and what on earth is good of it all? What good of them or me I can't see. So shall I take my least dear fuel of life to heap on my soul and kindle
my wit to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults and punishments. I will not. I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? What is the point of their teaching of toil and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. What does it matter to me if they can't write a description of a dog, or they can't? What is the point to us both? It is all my own. And yet I am supposed to care with all my might. I don't and will not. They won't and they don't, and that's all. I shall keep my strength for myself. They can keep theirs as well. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. Okay. Now let us see what point says. अब देखेंगे शायर क्या कहता है इस point में. शायर क्या कहता है? I already told you so many times during routine classwork that there is a tragedy. You have been learning English into Urdu or your own language, but that is of no use to learn English into English, though there are problems both with the teachers and as well as the students, but still we will try. It is better to, if we make mistakes and continue, than to avoid using English during learning English. Okay. When will the bell ring and this weariness? शायर कहता है मैं थकावट है, मुझे भी थकावट है, आपको भी थकावट है. अब एक ही इलाज इसका है, घंटी आखिरकार बजेगी और हम सब चले जाएंगे यहाँ से. How long have they tugged the leash and stand apart? आपने जो बैग है वो पहले से बंद किए हैं, अब तैयार है घंटी की आवाज सुनने के बाद, क्योंकि आप बाद में क्लास से चले जाएंगे. My pack of unruly hands I can't start. इसको बहुत सताया है बच्चों ने, इसको इसलिए लेके बाद में इसने लिखा है my pack of unruly hands I can't start. ये pack of unruly hands, पैक हो गया क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं. He conquers those students, those were possibly शायद वो अनकंट्रोल थे, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, पढ़ने का उनका कोई जी नहीं लगता था, इसलिए यूज किया वर्ड unruly hands. Hands here means kind of dogs, और जो किसी काबू में नहीं आता. I can't start. मैं लेसन कैसे शुरू करूंगा जबकि ये किसी भी तरीके से तैयार नहीं है. Them again on a theory of knowledge, किसी यानी theory means उस एनिमल और बर्ड को कहते हैं जिसके पीछे शिकार किया जाता है, जो जिसके पीछे शिकारी लगा रहता है. तो इसलिए अब हम नॉलेज के पीछे पड़ा हूं, लेकिन ये कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है ये बच्चे. I can't hold them and order them no more. मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता हूँ. अब मैं फोर्स नहीं करता हूँ क्योंकि एजुकेशन जो है इसके लिए बिहेवियर इंसान का ठीक होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए ताकि ये कुछ जज़ब कर सके. अब अगर ऐसा ना हो तो ये वन साइडेड मैच जो होती है, टीचर कहे बच्चे कहे हों, उनका जी आपका जी ना लगे, तो दैट इज ए प्रॉब्लम. सो हियर ही सेज कि मैं उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता हूँ, मैं उनको ज़बरदस्ती में पढ़ा सकता हूँ. ये कोई ऐसी बात नहीं कि ज़बरदस्ती किसी से कहलवाई जाए, बल्कि उस वक्त कारीगर होता है जब इंसान दिमाग लगाकर इंसान के जो सेंसेस मोटिवेट हो, खुद मोटिवेट हो कुछ सीखने के लिए. No longer now can I endure the burnt. मैं जल रहा हूँ, मैंने तैयार किया है, इसलिए लेसन तैयार किया होगा, लेकिन बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए जल रहा है. मैं इस जलन को, इस परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. Of the books that lie out of the desks, a full 3 score, that means 60 students. इसके पास करेक्शन के लिए कापियाँ हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, वो किताबें पड़ी हुई हैं डेस्कों पर, 3 scores हैं ये. Of several work that they have offered me, बहुत सारे काम जो हैं मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा ये वक्त अभी ज़ाया हो रहा है. I am sick.
and what on each is good of it all. मैं तो बीमार हूं अब बेहतर क्या है? What good of them are me? I can't see. उनमें बेहतर क्या है, मुझ में बेहतर क्या है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हूं. So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul? मेरे जो ये डियर फ्यूल जो है, मेरी जो तवानाई है, मेरे खून का ये कतरा जो है, इसको मैं अपने रूह को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करूंगा. अगर मैं इसको आपकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करूंगा तो ये ज़ाया हो जाएगा. बेहतर ये है कि इसको मैं अपने रूह के लिए जिंदा रखूंगा. And kindle my will to flame that shall consume this dross of indifference. मैं अब एक ऐसे चिराग को जलाने की कोशिश करूंगा जिसमें ये रिमेन्स जो है, यानी वेस्ट जो है, ये वेस्ट यहाँ कंपेयर करते हैं अपने बच्चों से. तो अब इनको मैं किसी नुक्ते पे खड़ा नहीं कर सकता हूँ, ये किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए तैयार नहीं है. एंड kindle my will to flame that shall consume this dross of indifference. Indifference means ये कि उस्ताद पढ़ाना चाहता है लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है. मैं इसलिए अपनी तवानी बचा कर रखूँ. and take the toll of their insults and punishments. यहाँ कहे आजकल जो कि कोविड-19 चल रहा है, डेथ टॉल कहाँ पहुंची है, ये जो इन्फेक्टेड है उनकी टॉल कहाँ पहुंची है, ये जो बैड नंबर जो है, increasing bad effect of causes, increasing bad news, that's called actually toll. कोई हादसा होता है तो मतलब ये डेथ टॉल कहाँ पहुंची, ये बाकी चीजों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, पर्टिकुलरली के लिए किसी बुरी खबर के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो दिस पॉइंट आल्सो यूज द वर्ड टॉल. This dross of interest and take the toll of their insults and punishments. अब उनकी तरफ से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो मुझे मेरे साथ मजाक करते हैं. ये एक मजा के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, कोई भी काम, कोई भी तरीका कार्यगर नहीं होता है. I will not, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा. I will not waste my soul and my strength for this. इसके लिए मैं अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपने रूह को जाया नहीं करूंगा. What do I care for all that do amiss? ये जो कुछ मैं करता हूँ वो गलत हो जाता है, इसका गलत नतीजा निकलता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, वहां से वो मजाक करते हैं. Amiss here means wrongly. What is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. Abyss here means bottomless. जैसे हवा में तीर चलाएंगे, समुद्र में कोई कंकर फेंकेंगे, उसके क्या कोई कुछ नहीं होता है, जाया हो जाता है वो. इसी तरह इसका पढ़ाना भी ये कहता है, ये जाया हो जाता है सब. What does it matter to me if they can't write a description of a dog, or if they can't, अगर ये डिस्क्रिप्शन एक डॉग का मजमून नहीं लिख सकते हैं, ताकि उसकी इनके इन्हें शक हो जाता है कि कोई न कोई बात है जो हमसे गलत हुई है. अब सो वी हैव टू राइट ए कंपोजिशन ऑन ए डॉग. व्हाट इज द पॉइंट टू अस बोथ, इट इज ऑल माय ऑन. हमारा उस मेरा और इनका मामला क्या है, इट इज ऑल माय ऑन. आई डोंट केयर. अब मुझे इसकी परवाह नहीं है, इन्हें पढ़ना नहीं है. इनका ये जो लास्ट पीरियड में ये पढ़ नहीं सकते हैं, इनकी ख्वाहिश नहीं है पढ़ने की, तो मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है. एंड yet I am supposed to care with all my might. लेकिन फिर भी मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकता हूँ. हो सकता है कोई न कोई तरीका मतलब फायदा मंद साबित निकले. I don't and will not. No. मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए, अब मेरा कोई तरीका कारीगर नहीं हो सकता है. अब कोई ये जो है आउटपुट नहीं होता है, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है ये पढ़ने के लिए तैयार. आई डोंट एंड विल नॉट. मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करता और नहीं करूंगा. दे वोंट एंड दे डू नॉट. दैट्स ऑल. न मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए अब, और न वो पढ़ने के लिए तैयार थे और मैं तैयार हैं. सो दैट इज ऑल. अब यही मामला है. आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ. They can keep theirs as well.
یہ اپنے لیے اپنی توانائی بچا کے رکھیں گے, میں اپنی توانائی اپنے لیے بچا کے رکھوں گا تاکہ میں دوسرے وقت اس کو استعمال کر سکوں. Why should we beat our heads against the wall? To beat the head against the wall here means attempt to do something that is clearly impossible. دیوار سے سر ٹکرانے سے سر ہی پھوٹ جاتا ہے, دیوار کو کچھ نہیں ہوگا. اس طریقے سے پڑھنے سے یا پڑھانے سے یا کوئی کوشش کرنے سے پڑھائی حاصل نہیں ہوگی, بلکہ دونوں میں استاد اور اسٹوڈنٹ میں ٹکر ظاہر ہو جائے گی. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. اب میں بھی یہی کوشش کروں گا, میں بیٹھوں گا, میں بیٹھوں گا, میں بھی اب گنتی کے انتظار میں ٹائم پاس کر لوں گا. گھنٹی بجے گی, ہم سب چلے جائیں گے. جتنا ہی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ فور دا لاسٹ پوائم. It is last about one and next will be the last poem, then we will proceed towards those other lessons. Thank you very much.